Good morning, children. Today we are going to discuss another topic, that is gene therapy. In the previous lecture, we have discussed about insulin, how insulin is genetically prepared. Today we will be discussing about gene therapy. So now let us start with the topic. Now, gene therapy is actually a process, or you can say a collection of methods through which correct genes can be placed in an individual. Now, in certain cases where there is a defect in gene due to mutation, because of that many kind of diseases can arise. Now, the gene can be corrected, the defected gene can be corrected and it can be placed in embryo or the child. This is called as gene therapy. Now, genes are inserted in cells to treat the disease. Now, correction of gene involve various things such as delivery of normal gene into a person or an embryo to take the function of the defective, or you can say the mutant gene. So, let us now talk about this in detail. Now, adenosine deaminase deficiency, also called as ADA, it is one of the SCID, as you can see on the screen, severe combined immunodeficiency, a type of disorder that affects the immune system of human beings. Not only human beings, even in case of mice it can happen. Now, this is caused due to mutation in chromosome number 20, which codes for the enzyme adenosine deaminase. Without this enzyme, the body is unable to break down the toxic substance called deoxyadenosine. Now, because of the buildup of this toxic substance, this destroys many cells which are important for fighting. These are called as T and B cells, T and B lymphocyte cells. So, naturally, this enzyme is very important for the proper development of T and B cells. Now, persons having mutation in the chromosome number 20 at a particular position, which is responsible for production of ADA enzyme, in those persons, SCID will be visible, that is severe combined immunodeficiency will be visible in form of less production of T and B cells, and those person will suffer from immunity, that is because of the lack of T and B lymphocytes, they may not be well. That is the reason why gene therapy has been taking a prominent role in order to curb such kind of disease. Now let us talk about ADA as such. The first clinical therapy, it was given in 1990 in a 4-year-old girl suffering from ADA. Now, what were the steps during the process as such? T cells was isolated from the girl, many T cells, and was grown in a medium. In that particular medium, with the help of a viral vector, the normal gene responsible for the production of ADA enzyme, adenosine deaminase enzyme, it was transferred to the lymphocytes of the girl, which was cultured in a medium. And all the engineered cells, now they contain the correct gene for ADA, that was again introduced into the patient. So this was able to cure disease, but it was not permanent, because as you know, even the T and B cells have got a certain life. After that they will die. So naturally, with the death of T and B cells, since in these T and B cells the correct form of gene was placed, with the death of T and B cells again the person got ill. So this is not a permanent cure. Now, in this condition, there can be 2-3 things. Either we insert regularly the enzyme
that is ADA enzyme responsible for the proper growth of T and B cells, adenosine deaminase enzyme. बट अगर हम उसको बार बार उसको जो है इंजेक्ट करके पेशेंट में देंगे, आप जानते हो एंजाइम्स यानी कि प्रोटीन, उनकी एक सेल्फ लाइफ होती है, वो जब डिस्ट्रॉय हो जाएगी आपको फिर से इंजेक्शन देना होगा, फिर कुछ समय बाद फिर से इंजेक्शन देना होगा, तो ये एक परमानेंट क्योर नहीं है। दूसरा एक क्योर हो सकता है जहां हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें, लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता और ये भी एक परमानेंट क्योर नहीं है, ऐसा देखा गया है एडल्ट के केस में। तो परमानेंट क्योर क्या हो सकता है जीन थेरेपी का? नो, डायग्नोसिंग द डिजीज, जस्ट लिसन टू माय वर्ड्स, डायग्नोस करना डिजीज को एट द टाइम ऑफ द just before the birth, when the baby is in embryo stage, if you are able to diagnose the disease at that particular stage and then you are transferring the normal gene responsible for ADA enzyme at that particular stage in the embryo, that is the person who is going to become a patient after the birth, in that particular stage if you are going to transfer this can be successful. बट अब इसके लिए देखिए कितना दिक्कत है। पहले बच्चा जो है अभी पैदा भी नहीं हुआ, ही इज इन द वूम इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो, एंड हाउ कैन वी डायग्नोज द डिफेक्ट इन दैट पर्टिकुलर चाइल्ड एज सच? So this is difficult, and if that disease is diagnosed in the embryo state, then only the corrected gene from the bone marrow can be transferred to that particular child, and then this program can become successful. So the process of gene therapy हम आपको बता दें। देखिए यहाँ पे जो आपके बुक में जिस तरह से दिया हुआ है, ये देखिए, ये बैक्टीरियम कैरिंग प्लाज्मिड विथ क्लोन नॉर्मल एडीए जीन, ठीक है। ये जेनेटिकली डिसेबल्ड रेट्रोवायरसेस हैं। क्लोन जीन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द वायरस। ये जो जीन जो क्लोन हुई है, जहाँ से मान लीजिए किसी नॉर्मल इंडिविजुअल से जीन ली, उसको बैक्टीरिया में पहले क्लोन किया, वहाँ से आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वायरस में, रेट्रोवायरसेस में। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि वायरसेस का जीनोम होता है वो आरएनए का बना होता है। इसका मतलब जो डीएनए की जीन है, पहले यू हैव टू कन्वर्ट इनटू आरएनए इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट इनटू द वायरस as such, and this virus is then allowed to infect T and B cells so that the normal genes can be placed in the T cells as such. तो आपको वायरस की कॉलोनीज को T और B सेल्स, जो इन्फेक्टेड T and B सेल्स है, कहने का मतलब जो T and B सेल्स में नॉर्मल ADA जीन प्रेजेंट नहीं है, उनके साथ उसको रखना होता है। द वायरस इज अलाउड टू इन्फेक्ट दोज सेल्स एज सच। फिर वायरस का जो जीनोम अंदर आएगा, आप जानते हो सिर्फ जीनोम एंटर करता है, वो आरएनए का होता है। तो विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम that will convert the RNA genome into DNA genome, and that is the reason why it is called as cDNA। आप जानते हो इस टेक्निक को cDNA कहेंगे। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू जो है वो RNA DNA में कन्वर्ट हो जाएगा and it will get inserted into the T and B cell genome, और जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिप्लेस कर देगा और नेचुरली एडीए एंजाइम प्रोड्यूस होने लगेगा। लेकिन हमने आपको ऑलरेडी बताया है, टी और बी सेल्स जो होते हैं उनकी एक लिमिटेड लाइफ होती है। व्हेन दे विल गेट डिस्ट्रॉयड, नेचुरली इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। सो एक ही क्योर है, क्या करना, जो डिफेक्टिव जो नॉर्मल जीन है उसको एम्ब्रियोनिक स्टेज में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तब जाके ये क्योर हो सकता है। बच्चे में एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बच्चा हो वहाँ पे, उसकी वजह जो टी और बी सेल्स है, अगर आपने उसमें डिफेक्ट है उसमें और आपने उसमें इंसर्ट करा भी दिया तो वो रेप्लिकेट नहीं करेंगे टी और बी सेल्स, और उनकी जब डेथ हो जाएगी तो बट नेचुरल उनमें जो आपने करेक्ट जीन डाला था वो भी किसी काम का नहीं होगा। अगेन द पर्सन विल गेट इल।
because now the cells will be defective. सो इसका क्यों तभी है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज यानी कि स्टेम सेल्स, आप जानते हैं एम्ब्रियो में इनर सेल मास होता है, इनर सेल मास में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। अगर वहाँ पे करेक्ट जीन इंसर्ट कर दिया जाए तो फिर ये डिफेक्ट जो है वो दूर हो सकता है। नाउ दिस इज द होमवर्क असाइनमेंट, डिफाइन जीन थेरेपी। आपको बताना है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एडिनोसाइन डेफिशिएंसी। हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, प्रॉपर टी एंड बी सेल्स नहीं होता। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ दिस डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। थैंक यू।